Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra, I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I am going to talk about molecular orbital theory and Srimad Bhagavad Gita. The bond between the two molecules and the bond between the soul and body. I am going to talk, I am going to compare, I am going to make all of you understand both are related with each other. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by Sri Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple. I would have to say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but a true sense pure book of the science and humanity. And I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita, trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. So let's get into molecule orbital theory. In a chemistry, this is a pure chemistry. When I talk about molecular chemistry, when I talk about organic and inorganic chemistry, it is part of chemistry. The molecular orbital model is by far the most productive of the various model of the chemical bonding. There is chemical bonding in our body is constructed, means our body is body is mainly constructed by many molecules, and molecules are associated with a chemical bond, static bond, and means van der Waals bond, as well as many associations like that. Many bonds are there, and serves as a basis of the foremost quantitative calculation, including those that the lead many computer generated images that you have seen elsewhere in this unit. Molecular orbits. Chemical bonding occurs when the net attraction force between an electron and two nucleus exceed the electrostatic repulsion between the two nuclei. Means there is a two molecules, there is a electrostatic attraction or repulsion. This happen when only molecules or chemical bonding is happen. Otherwise chemical or molecules bonding will never happen. Means there is a molecules. Our body is mainly making of the molecules, and each and every molecules we would have some kind of energy, some kind of in form of static energy, in form of kinetic energy, in form of many type of energy. When it associate with another molecules, it will release or gain some energy, and gaining and releasing of some energy, both molecules become making a one bond, that is called chemical bond, chemical to chemical bond, ion exchange or electron exchange bond. So this is a pure chemistry, and this chemistry is rightly applied when soul is making a bond with our body, when static energy making a body with a non-static energy, when astral body is making a bond with a non-astral body. So there is a relation between the astral body and non-astral body, our body and soul. As the two hydrogen nuclei move towards each other, and the 1s atomic orbit of the isolated atoms gradually merge into the two molecule orbit, in which the greatest electron density falls between the two nuclei. Since this is just a location in which the electrons can exert the most attractive force on the two nuclei, and simultaneously this arrangement constitute a bonding molecules orbit, regarding it as a three-dimensional region of the space. We see the symmetrical about the line of the center between the nuclei. In accord with our usual nomenclature, we refers to is a sigma and pi bond. Sigma and pi bond are there. So this is all about chemistry. How this related with our body and our soul. So let's get into chapter number 2, Srimad Bhagavad Gita. When Arjuna lost his energy, Arjuna stated, Madhav, I don't want to destroy my family, the value of my family. And if my family will destroy, then the ideology and the value of my family will be destroyed. And if my family's ideology and particular value will be destroyed, then entire society will be destroyed. So as a path, I don't want to destroy my family, and I don't want to fight this warfare. Arjuna lost his energy. Arjuna released his energy into sky, and he doesn't has anything at that time.
At that time he thought that I am totally worthless person, I am not having anything. But listen it very carefully, but there is some energy in the form of static energy, in the form of static, there is a static or potential energy. We all are having a potential energy. Our body is mainly making of constituted of the many nucleus or many molecules, and each and every molecules are associated with each other and making some kind of chemical bonding as well as a van der Waals bond. So because of this particular bond, there is ion exchange bond. Lord Krishna tried to boost up the particular energy which one is situated in the particular each and every molecules of Arjuna's body. Lord Krishna started to boost up. Lord Krishna here stated, each and every molecules of your body are having some kind of means each and every molecule of your body is having some kind of energy. You have to try to recognize who you are. When we try to recognize who we are, self-realization, which does means to identify what kind of potential energy you are having, to understand who you are. Self-realization means to understand, to boost up your energy, to understand your real potential. क्लेब्यमास्मगं पार्थाने तत्त्वयुपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्य त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप. इस श्लोक से ही हमें इतना एनर्जी बूस्टअप हो जाता है ना. मॉलिक्यूल ऑर्बिट थियरी, दिस इज ओनली मॉलिक्यूल ऑर्बिट थियरी. मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर. दिस इज अ प्योर केमिस्ट्री. हियर लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड, here Lord Krishna tried to boost up the energy level of Arjuna's molecules. Here Lord Krishna stated, Klebyam masmagam partha ne tatvayupapadyate sudram hridaya dobalya tyakto uttishta parantap. जब आयन एक्सचेंज होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है ना, तब ऐसा होता है. ये लॉर्ड कृष्णा से क्लेब्यम मास्मगम पार्था ने तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप. ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ. तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे, तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाओगे. ये तुम्हें तुम्हारी नपुंसकता शोभा नहीं देती पार्थ. एंड गिव्स अप द पीटी वीकनेस. ये तुम्हें मतलब जो भी है तुम्हारा वीकनेस है उसको त्याग करके युद्ध करो पार्थ. इसीलिए त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, इसीलिए उठो पार्थ और युद्ध करो. ये लॉर्ड कृष्णा ट्राई टू बूस्ट अप द एनर्जी लेवल ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ अर्जुना. एंड ईच एंड एवरी व्हेन लॉर्ड कृष्णा स्पोकन दिस वर्ड त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, तब अर्जुना का जो मॉलिक्यूल्स था उनके अर्जुन के बॉडी का वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग करने लगा. और लॉर्ड कृष्णा उनको ऐसे इतना लेवल बूस्ट अप कर दिया कि वो मतलब अर्जुना कहने लगे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्णा. उसके बाद कहते करिष्य वचनम तवा स्थितसम गत संदेह. मेरी जो बुद्धि चली गई थी वापस स्थिर हो गई, वापस मैंने प्राप्त कर लिया. स्थितसम गत संदेह, मेरे संदेह जो नाश हो गए. गत संदेह परिष्य वचन तवा, आप जो बोलोगे वासुदेव वो मैं करूँगा. हियर there is some kind of potential energy in our soul. We just have to recognize, because our soul is mainly making of some kind of energy. Our soul is nothing but energy. It's like a bundle of energy. It's like a cloud of energy, and we just have to understand energy will never lose. Energy will never create, never lose. So we just have to understand this principle, the law of conservation of energy. Energy only transfer from the one body to the another body, and from one form to another form. Static energy will be transferred into kinetic energy, and kinetic energy will be transferred into magnetic energy, and magnetic energy will be transferred into some kind of electric energy. So we just have to understand these things. These all are the forms of particular energy. कार्पण्य दोषो प्रस्ता स्वभाव पुष्सामितं सर्वधर्म संच्युत ये चेतासानि निश्चितं ब्रूहिता मे शिष्य ते हम समधि मम त्वं प्रपन्नम. Here Arjuna said, now I become your disciple. Please try to guide me, Lord Krishna. Please try to show me the right path. श्री भगवान उवाच
Supreme Personality God had said while speaking like a learned person, learned word, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for living nor for death. Those who are wise neither lament for death nor for living. न त्वेवाह जातु नास न त्वं नेह जनाधिपि न चैव न विश्याम सर्ववयतं परम. Never was that time when I did not exist. Lord Krishna here said, never was that time I did not exist, nor you, and nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे तुम नहीं थे, जहाँ पे मैं नहीं था, जहाँ पे हमारी आत्मा नहीं थी. आत्मा हमेशा एनर्जी है. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ना ही वो कभी जन्म लेती है. आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है. इट्स सिमिलर, इट्स समथिंग लाइक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. स्टैटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, एंड मैग्नेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर इनटू द काइनेटिक एनर्जी. As embodied soul continuously passes in this body from the boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into the another body at a death, and the sober person is not bewildered by such a change. It's about the changes of the soul. अविनाशी तु तृतीय येन सर्वमित ततम विनाशम अव्ययम यम न कचित करुतम अहर्ति. That which prevent the entire body you should know to be in the indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. हमारी जो एनर्जी हमारी सोल है उसको कभी इम्पेरिसेबल, उसको कभी कोई नाश नहीं कर सकता. न जायते म्रियत्वा कदाचिन न भूत्वा भवित्वा न भयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो. अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर. लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं न हन्यते हन्यमान शरीर. मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, एक बार जो बॉन्ड बन गए उसके बाद वो बॉन्ड टूट भी जाता है, बट क्या होता है उस जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका कभी नाश नहीं होता, दूसरी बार बॉन्ड बनाता है. ऐसे ही मतलब जितनी बार बॉन्ड टूटता है उतनी बार बॉन्ड बनाता है, पर उस एनर्जी का कभी नाश नहीं होता है. यहाँ पे कितना हन्यते हन्यमान शरीर है, हमारा शरीर का नाश हो जाएगा पर जो हमारे अंदर एनर्जी आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होगा. हमारी जो आत्मा है ना बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी हुई है, बहुत सारी एनर्जी से बनी हुई है. इट्स अ बंडल ऑफ एनर्जी एंड विच मेक अ केमिकल बॉन्ड, विच मेक अ पोटेंशियल वंडरवाइज बॉन्ड, इट्स मेक अ मैनी बॉन्ड्स. सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वेदा विनाशी नित्यम य अजनम अव्यम कथम च पुरुषो पार्थ धाति अंति हंतकमी. यहाँ पे कहते हैं ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट द सोल इज इंडिस्ट्रक्टेबल, इटर्नल, अनबोर्न एंड इम्यूटेबल किल एनीवन और कोज एनीवन टू किल. मैं किसी को मार ही नहीं रहा हूँ ना, तो हमेशा आत्मा तो मतलब अजन्मी है, आत्मा तो इनडिस्ट्रक्टेबल है. आत्मा का वेद मतलब वेदा विनाशी नित्यम, वेदों का नाश हो जाएगा पर आत्मा का कभी नाश नहीं होगा. पार्थ पाशांशी जीर्णा यथा विहाय नवानि गरंती नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयति नवानि देहि. अन्यानि संयति नवानि देहि. As a person put on the new garment, giving up old and useless one. Similarly, accept the new material body and giving up the old and useless one. यहाँ पे क्या कहते हैं, आत्मा हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड होता है वो एक बार बॉन्ड बना लिया उसके बाद बॉन्ड टूट जाता है तो क्या करते हैं, मतलब एक बॉन्ड होता है उसके बाद क्या करते हैं, इसके पास एनर्जी तो होता है, इसके पास भी एनर्जी होती है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहा तो दूसरी जगह पे जाके बॉन्ड बनाएगा, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो. तो मतलब एक बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं. ये बॉन्ड हमेशा एक बार टूट भी जाता है ना तो दूसरी बार बॉन्ड बनाएगा. तो मतलब ये है कि बॉन्ड जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, खाली बॉन्ड टूटता है. जो हमारा बॉन्ड है हमारे शरीर के साथ वो खाली टूटता है, बाकी तो मॉलिक्यूल्स हमारी जो आत्मा है वो तो ऐसे ही रहेंगी. हमारा आत्मा है वो तो मतलब अभी हमारा शरीर के साथ जो बॉन्ड बनाया एक बार वो टूट गया तो दूसरे शरीर के साथ बॉन्ड बनाएगी हमारी आत्मा. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थियरी. नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन अंक्लेदन्त्यापो न शोषति मारुत
na shosati maruta, na shosati maruta. The soul can never be cut to pieces by any weapons, nor burnt by fire, nor moistened by water, nor withered by winds. वो तो हमेशा अजन्मा है soul तो. This individual soul is unbreakable, insoluble, and can neither burn nor dried. And he is everlasting. हमारी आत्मा है everlasting. Energy everlasting है. Energy का कभी नाश नहीं होगा. And present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. हमारे बॉडी के लिए हमें नहीं करना चाहिए. हमारे बॉडी भी मॉलिक्यूल से बनती है, पर बॉडी एक बार हमारा जो रिलेशन टूट जाता है, हमारा बॉन्ड टूट जाता है हमारी आत्मा के साथ, हमारा बॉडी का, तब बॉडी का नाश हो जाता है ऑटोमेटिकली. मतलब डिके हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब उसका नाश हो जाएगा. If however you think that the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament. You should not have any reason for lament. जातस्य मृत्युचः मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सचः तस्माद परिहारस्य तशोषित महर्षि. यहाँ पे क्या कहते हैं? One who has taken birth is sure to die. लिसन इट वेरी केयरफुली. लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते थे, हमारी आत्मा के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं. यहाँ पे कहते जिन लोगों ने जन्म लिया है, हमारी आत्मा तो अजन्मी है. जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका मृत्यु निश्चित है. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take a birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Parth, Dear Lord Krishna कहते थे, you should not lament. हमारी जो आत्मा और हमारा जो शरीर का जो रिलेशन, एक बार बॉन्ड टूट जाता है, केमिकल बॉन्ड टूट जाता है, आयन एक्शन बॉन्ड टूट जाता है, आयन बॉन्ड टूट जाता है, वांडरवाल्स बॉन्ड टूट जाता है. उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, हमारे शरीर से भी एनर्जी रिलीज होती है. हमारे शरीर से एक बार हमारी आत्मा का बॉन्ड टूट जाता है. उसके बाद जब हमारे शरीर का नाश होता है, उसको जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसके अंदर से भी एनर्जी रिलीज होती है. सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम काइंड ऑफ स्टैटिक एनर्जी रिलीज होती है. वो कहाँ से आती है? वो प्रोवाइड करती है हमारी सोल, हमारी बॉडी को. तो वो हमें समझना चाहिए. इट्स अबाउट मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थियरी. So I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.